Today we will start with the pointers, which is very important functionality of C programming. So before understanding pointers, I just want to tell you that pointer, it is like just another variable. So you have studied different type of variables. Similarly, this variable A, this is an integer variable. It will store an integer type of value. This is float type of a variable. It will store a floating type of value, and similarly, character C will store a char type of value. Similar to these variables, pointer is also a variable. We will talk about it later. So it also has type. It also has storage. So like for int, we need 4 bytes in the memory. For float, we need 4 bytes. One byte for character. Can you tell me, any of you, what do we understand by a simple variable? Variable से हम क्या It is a name, storage, location. So it is a name for a piece of memory that holds a value. Integer type होगा तो integer type of value, double होगा तो double type of value. So similarly, pointers are also variables whose values उसकी कौन सी वैल्यू, वो किस तरह की वैल्यूज स्टोर करते हैं? Values are memory addresses. ठीक है? So there are also simple kind of variables, not other kind of variables. बस ये है difference कि बाकी के variables जो है वो values store, numbers या फिर character store करते हैं, और ये store करते हैं memory addresses. So let's understand this with an example. Suppose I create a simple variable I is 3 and I assign it some value to it. So इससे क्या हो रहा है? This declaration tells the compiler to reserve a memory to hold this integer variable, integer value 3. हमको एक मेमोरी में स्पेस allocate कर दो ताकि हम integer value को store कर सके. So suppose for integer value I need 4 bytes. Sorry. So this is my variable I. Second, so it will tell the compiler to reserve the memory to hold an integer value. मतलब वो 4 bytes allocate कर देगा. Associate the name I with this memory location and store value 3 in this. So it's a 4 bytes of memory starting with address 1000 to 1003. Okay. So this is number of memory cells. This is the value at location. This is the location I.
And when we talk about address, तो ये this is the starting address जो होता है, this is my address, location number or address. So this happens, this is what happens when we create when we declare a variable in C. Now we already know that इसमें it is 4 bytes. If I declare a float double type of a variable, it will need 8 bytes of memory. So how much memory is required? This depends on the data type of the variable. Okay. Now this address, this location number or address, this is the place at which this value 3 is stored. Now this number 1000 can't be relied upon. If एक बार execute किया, if for one time you execute the code, it may be possible that you get the address, this 3 stores at address 1000. Another time when you execute the code, maybe you get some another memory address. So this memory address changes every time. This is randomly assigned by your system. Now, but we know that these memory addresses are numbers. So I can print them. Now there are two important operators related. यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाँ बताओ. मैम लोकेशन आई और लोकेशन नंबर ये दोनों में क्या फर्क है? लोकेशन क्या? लोकेशन आई आपने लिखा है ना, आई की तरह. मैंने ये बोला था हमारी जो मेमोरी है रैम, दिस इज डिवाइडेड इनटू सीक्वेंस ऑफ सेल्स. And each of these cells are numbered with a unique, they have got unique numbers. इन numbers को हम बोल रहे हैं memory addresses. अब suppose मेरा ये है, इस memory cell को मिला 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Suppose these are my memory locations. Ab by default, when I write this statement, इसमें क्या हुआ? I need to allocate memory for an integer type of value. So how much bytes are required? This is a 1 byte. This is 1 byte. This is also 1 byte. तो integer को store करने के लिए how much bytes are required? 4 bytes. Suppose मैंने ये वाला लोकेशन चूज किया 1002. अब मुझे कितनी बाइट्स चाहिए? 4 bytes. तो these 4 bytes will be used to store this integer variable I. और जो इसका starting address होता है, that is considered as the address of a variable. Okay. Is it clear? Yes. Okay. मैम वो ऊपर 1004 है या 1003 है? ये 1004 है, मतलब this is the next address. 100 मतलब 1000 से 1003 तक तो I को मिल गया ना? ओके मैम. अगर मैं ये वाला देती तो ये वाला इसको I को मिल गया. So now this is available for any other variable, any other purpose. Is it okay? Okay ma'am. Now there are two important operators which are associated with pointers. The address operator. ये हमने पढ़ा है पहले, देखा है हमने इसको.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पे? Yes. Array. Scanf में. All the references. Scanf function में मैम. Scanf. scanf फंक्शन में क्या करता है ये? It ये- stores the value at the address of this variable. तो हमने कहा था कि एड्रेस स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है, वरना वो किसी भी मेमोरी रेंडमली वो कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा, विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव दैट वैल्यू. ओके, सो इफ आई राइट दिस piece of code, इससे क्या आउटपुट आएगा? 5? यस और नो, या कुछ और? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Value of x is 5. अब अगर मुझे एड्रेस देखना है, सपोज मैं इसको x की जगह i ले लेती हूँ, है ना? दिस परसेंट u इज अनसाइंड इंटीजर, तो हमको एक नंबर मिल जाएगा. द परसेंट u इज फॉर अनसाइंड इंटीजर, और इसमें मैं लगा दिया मैंने एड्रेस ऑपरेटर. इस केस में आउटपुट विल बी 1000. Is it clear? The address operator gives me the address of the variable. Clear? Yes or no? Ma'am, excuse me. Huh? Ma'am, I don't know why I'm losing my internet connection again and again. Can you please explain after the difference you were telling of between location I and location address? This thing. No, ma'am. Like you have drawn a grid, that thing. This one. Yes, ma'am. So I said that what this statement instructs the compiler. It first instructs the compiler that allocate memory for storing an integer value. तो अगर integer value को store करना है, how much bytes are required? 4 bytes. Yes, ma'am. So suppose I start from here. So it starts with this. It allocates these 4 bytes to this to a integer variable. Now it says associate I to this memory location. So this memory location is the starting address. हमको क्या मिला? हमको 1000 से 1003 तक की locations were now reserved for storing an integer variable I. But when we talk about the address, this address is the starting address. It's okay? Yes, ma'am. Thank you. Now this printf, when we talk about the address operator gives me the address of a variable. So अगर मैं simple %i लिखती हूँ, this gives me the value. And if I apply this address operator, it will give me the address. Is it okay? The another operator which is associated with pointer is called as the dereference operator. मैम आई 4 बाइट्स का नंबर है, तो वो 1000 से 1003 तक है. तो हाँ. हम कौन सा, फिर उसको कैसे पता कौन सा देना है? स्टार्ट वाला ही देगा? हम हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस से ही काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्टार्ट एड्रेस है तो वी कैन नो ना कि अगली 3 बाइट्स भी इसी के लिए लोकेटेड है. ओके मैम, ओके. मैम इसमें हम लोग %u ही क्यों लिखते हैं? क्या? %u ही क्यों, सॉरी, एड्रेस ऑपरेटर के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर u क्यों लिखते हैं? हाँ. Because these addresses are positive numbers
So we have %u is for unsigned integer. तो हमको एक प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे. There are other format specifiers as well like %p, वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू देगी. But %u is generally used so that we can see कि अच्छा हमको क्या नंबर मिला. And अगर हमको नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे जाना हो कभी, अभी हम आगे देखेंगे, तो it is easier. Okay. Okay. It is also called as indirection operator. In layman terms, we can also called it as value and address operator. Value and address operator, and it is represented by asterisk. Okay. Now, what this operator does is it allows to access value at a particular address. So suppose I have written this statement. Let's take it I. इससे मुझे क्या मिलेगा? This statement will give me 5. 5. This will give me Address of IP. 1000. And what this will give me? This Five. dereferencing operator, इसको ऐसे समझो, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, so 1000 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है? 5. So it will give me 5. Okay. Generally, we don't need to use these parentheses because precedence of means this has the same meaning. So we don't need to. This can also be written. Okay. Precedence of @ is higher than star, so this has same meaning. First, this will be evaluated and then this will be applied. यहाँ तक easy लग रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Now, अभी तक हमने pointers की बात ही नहीं करी. We have just talked about normal variables. वो कहाँ पे store होते हैं, उनके addresses हम कैसे print करा सकते हैं, और उन addresses पे if we want to access the value on the basis of address of any variable, how to do it. So for accessing the value stored at a particular address, we have this dereferencing operator. This is what we have discussed so far. Ma'am, Yes. ma'am, if we write printf %u and then we write the star @i, then what will be the output? इस केस में तो सेम ही आउटपुट होएगा. इस केस में it won't give you, I need to check because it may give you an error because there will be a mismatch of the format specifier, or I have to check. I have not tested it. Because when there is a mismatch between the format specifier of integer and float, it gives a 0 value or it gives some other value.
But in case of signed and unsigned it, whether there is an implicit typecasting or not, I don't know. So I have to check it. Now, so far we have just discussed how to retrieve print addresses and accessing value at particular address. Now let's talk about how these pointers are declared. इंटीजर वेरिएबल के लिए हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं? डेटा टाइप and name of the variable. This is the general syntax of declaring or defining any variable. In terms of pointers, we use, means this is also, we use asterisk. Okay, so I can use any data type, int star iptr double star dptr. This is a pointer variable, pointer to an int variable. This is pointer to a double variable or value. Now there are three things in this above declaration. The asterisk tells that the value iptr is a pointer variable. This tells that this pointer name, or if we consider this example, this iptr is a pointer variable. अब ये वेरिएबल है, तो जब हमने ये लिखा था int I, so ये वाला स्टेटमेंट में मेमोरी इज allocated, yes or no? Yes, ma'am. So this is also a variable, right? So this also needs some memory. So suppose this iptr, this is stored at memory location 2004. Is it okay? Yes, ma'am. Now the third thing this declaration tells is this iptr points to a variable of integer data type. Points to a variable मतलब it will store address of an integer variable. ठीक है? When we declare in this declaration syntax, this asterisk is not a dereferencing operator. It is part of the syntax of declaring a pointer variable. Is this clear? Yes, ma'am. Good. मैम हाँ, IPTR अगर int का हुआ तो उसको भी 4 bytes लगेंगे. IPTR नहीं. IPTR क्या कर रहा है? It is just storing the addresses. So मेमोरी के जो एड्रेस है वो कितनी बाइट यूज कर रहा है मेमोरी में? So it should. This is a very good question. In fact, I was coming to this point later, but let's explain this. This IPTR, suppose let's take this example in more detail. Suppose this is 2004 and this is my integer variable 4001 and this is I and this is IPTR. I create another DPTR. Oh.
And suppose memory address is 1124 and this double is suppose X. Okay, and this is 3024. Now this IPTR can only store, or the pointer variable can only store addresses. तो ये 4001 and this 3024. अब वो एड्रेस किसी का भी हो, चाहे से वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हो या वो डबल वैल्यू स्टोर कर रहा हो या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहा हो, वो एड्रेस तो सेम ही होगा ना. मतलब इट शुड मतलब सेम, मतलब इट शुड it needs same number of memory. Yes or no? जो बेस एड्रेस है वो तो उतना ही यूज कर रहा है ना. सपोज 1 बाइट है तो वो 1 बाइट ही स्टोर कर रहा है. Yes, ma'am. In general, in C, 4 bytes are required to store a pointer variable. जो हमारे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ना, दे नीड 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. तो कितना रेंज तक हम एड्रेसेस यूज कर सकते हैं? -8 to माइनस तो होगा ही नहीं, मेमोरी एड्रेसेस तो पॉजिटिव होते हैं. positive 15. What is the value? 2 raised to power 32. 32. ठीक है, 0 to 2 raised to power this. ठीक है. मैम ऐसा पॉसिबल है कि अगर रैम बहुत बड़ी हो तो लाइक दिस एक्सीड्स दिस लिमिट? नहीं, ये जब हम क्योंकि मेमोरी सेल्स जब डिवाइड हम करते हैं उसको, तो द एड्रेसेस आर assigned in a same manner. मतलब that format or that what to say, that protocol for creating addresses is same. Even if the memory address is 1, so this will be like 0000000001. This will be the address. ओके मैम. मैम डबल क्यों नहीं कराया ना हमने ये? कोई भी हो, किसी भी तरह का वेरिएबल हो, इट विल ओनली यूज 4 बाइट्स ऑफ द मेमोरी. क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस को कितनी मेमोरी जगह चाहिए होती है? ईच मेमोरी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बाइट्स. ठीक है. अब वो इंटीजर का हो या डबल का हो, डजंट मैटर. ईच लोकेशन ऑफ दिस मेमोरी, जो ईच सेल है, ये जो हमने नंबर दिए थे, हमने एक इजी नंबर दिए थे, बट दिस ईच लोकेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बाइट्स. और जब हम एड्रेसेस की बात करते हैं तो वो चाहे से इंटीजर का हो या डबल का हो, हम सिर्फ बेस एड्रेस की बात करते हैं. सो इट विल बी 4 बाइट्स ऑलवेज. सो मैम ये रेंज हमने फाइनल किसकी लिखी है? 0 to 2 की पावर 32 - 1. ये है कि हम कितनी मेमोरी सेल हमारे पास है, कितनी मेमोरी सेल इज प्रेजेंट. So is this question clear? How much memory is required to store a pointer variable? उसी में एक डाउट है मैम. जैसे अभी आपने बोला कि ये 2 raised to the power 32 - 1 तक नीडेड होती है, तो पर पॉइंटर तो 4 बाइट्स ही स्टोर करता है, और अगर उसमें 1 बाइट का कुछ स्टोर करते हैं तो एक बार वो बता दोगे क्या होता है? 1 बाइट का क्या? अगर 1 बाइट का कुछ हम स्टोर ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेमोरी एड्रेसेस स्टोर कर रहे हैं. एंड ईच एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइट्स.
एंड वी ऑलवेज स्टोर बेस एड्रेस, मतलब हम तो एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे ना, जब हमने यहाँ पे भी देखा था, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है ना 1000 and 1003 से, वी वर ओनली यूजिंग द बेस एड्रेस एंड ईच एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 bytes. Is it okay? Yes, ma'am. So मैम हर एड्रेस को 4 बाइट्स चाहिए, तो हमने अब ये कैलकुलेट 2 की पावर 32 कैसे कैलकुलेट करा फिर हमने कि कितने एड्रेस होंगे, मतलब कितने एड्रेस स्टोर हो सकते हैं? पॉसिबल है, हाँ. हम कैसे करें 2 की पावर 32 कैसे करें? हम तो रेंज सीखी थी कि अगर 4 बाइट, हाँ, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ना. इतनी मेमोरी सेल्स हो गई ना हमारे पास में, मतलब व्हाट वुड बी द नंबर, मतलब इतनी बिट्स. मैम तो 0 to 2 की पावर 4 - 1 होना चाहिए ना? हम बिट्स की बात कर रहे हैं ना, बिट्स में. ओके, सॉरी मैम. Each memory address is represented by 4 bytes. So how many memory addresses are possible? That was the question. So is this okay? Means whether it's a pointer to an integer or a pointer to a double or a character, any. It will, even if it's a pointer to an array, then also it will be storing only. It will be stored 4 bytes. Yeah. So suppose int star IPTR, int star DPTR, sorry, double, and char. अगर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर लगाऊं, so इसका आउटपुट will be 4. Size of DPTR output will be 4. CPTR output will be 4. It's okay. Now what we have done so far is we have just declared a variable, a pointer variable. How to assign a value to a pointer variable? Pointer variable क्या store कर सकते हैं? They can only hold addresses. ठीक है? So when you're assigning a value to a pointer variable, that value should be a address. And how we can get address of a variable? हम किसी variable का address कैसे देख सकते हैं? How can we access the address of a variable? By using ampersand. By using operator. Very good. So suppose I create it like this. I create a normal integer variable. What it does, suppose it allocates 4001 to this variable value and store 5 in it. Now I create int star IPTR and I assign this value, address of this. अच्छा नहीं, एक सेकेंड रुको. जब ये किया तो क्या हुआ, एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ पॉइंटर टू एन इंटीजर टाइप का, एंड उसका सपोज एड्रेस इज 1124. अब इस IPTR को I have to assign some value. I can do it using assignment operator, and since it's a pointer variable, it can only hold the address of a variable. So तो इधर क्या आ गया 4000. So this is a pointer to an integer variable. यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. Now instead of writing these two steps, I can write it in a single step as well. I can initialize the pointer in this manner.
ओके मैम यहाँ पे अगर हमने %, नहीं लगाया तो एरर दे देगा सिर्फ हाँ वैल्यू। हाँ, क्योंकि it is not supposed to store integer values. It is only supposed to store address of integer. Now, the important point to note here is the data type of pointer variable and variable whose address is stored in pointer should be same. Should be the same. इससे मेरे 2 पॉइंटर्स बने हैं या एक? एक। पक्का? Only this is a pointer to an integer variable. B is a normal integer variable. I said this data type of the pointer variable and the variable whose address is stored in the pointer should be same. So this is fine. ये एक integer type का pointer है and इसमें integer variable का address store है. But if I try to write this will give me error because a floating type pointer to an integer variable, उसको हम किसका एड्रेस दे रहे हैं? एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का एड्रेस. सो दिस इज नॉट अलाउड. सिमिलरली if I write x is equals to address of y, this is fine. But if I write address of b, this is not allowed. It's okay? यहाँ तक ठीक है? हम ये वाला पॉइंट वापस बताओ. इसमें ऐसा क्या था? डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल और जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उसका टाइप सेम होना चाहिए. तो जो इंटीजर टाइप का, इफ इट्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, इट कैन ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल. अगर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, इट कैन ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल. yes मैम बट ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हम कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर क्या टाइप का हमारा वेरिएबल है. अभी क्यों हो रहा है? दैट आई विल कम टू इट लेटर. अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग बेसिक्स. ओके. इसको एक्सेसिंग अ वेरिएबल थ्रू अ पॉइंटर. अब हमारे पास में एक पॉइंटर है एंड हम वैल्यू देखना चाहते हैं जिस भी वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर और डी रेफरेंसिंग पॉइंटर्स. ठीक है. डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हमने सुना लग रहा है क्या? Yes, ma'am, actually. Very good. This is my dereferencing operator. इसने क्या किया था? This gives me the value stored at a particular address. Yes or no? Pointer क्या कर रहा है? This is storing the address of the variable. तो अगर मैं ये dereferencing operator pointer पे लगा दूं तो it will give me the value stored at the address to which this pointer variable is pointing to. Okay, so let's understand this with an example. Int value 1 is 5. Int value 2 is 7. Int star ptr. This is a pointer to an integer variable. ptr is equals to address of value 1
printf person d. Now what this will do, this is my ptr, this is now this is a pointer, इसमें किसका एड्रेस है 1104 का. अब इसको मैं डी रेफरेंस कर दूं, so I will get the value stored at this particular memory location. So here I will get output 5. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I say this PTR is treated same as @value1? अगर मैं यहाँ पे लिखूं Yes, ma'am. printf %d %u ptr, तो इसमें क्या होगी, ptr की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 1104. और अगर मैं एड्रेस ऑफ वैल्यू 1 लिखूं, देन ऑल्सो आई गेट 1104. So this PTR is treated same as value 1. Similarly, dereferencing PTR is treated same as value 1 or मैम प्लीज दोबारा बता दो. एड्रेस ऑपरेटर साथ साथ लगाते हैं तो दे गेट मींस गेट नलिफाइड. ओके मैम प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैम. क्या चीज नहीं दिक्कत यहाँ, इसमें क्या था, क्या दिक्कत है बताओ, क्या चीज समझाऊं दोबारा. मैम पूरा ही मैम, ये वाला लास्ट वाला प्लीज. लगाया था, कहाँ लगाया था, ये रहा डीरेफरेंसिंग. नहीं, ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर हमने यहाँ लगाया था. ठीक है, तो ये हमको क्या करता है, द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस. यहाँ तक यहाँ पे समझ आ गया था. यस मैम. अब हमने क्या किया, पॉइंटर की वैल्यू क्या है, इट इज द एड्रेस. अगर हम किसी पॉइंटर पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इस एड्रेस की जो भी लोकेशन है वो. यस मैम. पॉइंटर की अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या आएगा, से ये वाला पॉइंटर की अगर वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या आएगा, ये जो पॉइंट कर रहा है वो. सो दिस गॉट प्रिंटेड. ठीक है, अगर मैं वैल्यू 1 का एड्रेस ऑपरेटर लगाऊं तो इसमें क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 का मेमोरी, इसका मेमोरी लोकेशन, दिस इज 1104. यस मैम. So can I say this PTR is treated same as @value 1? Yes ma'am. Similarly, this gives me the value stored at this address, stored at the address to which this PTR is pointing to. This PTR is pointing to memory location 1104, and dereferencing means value stored at this memory location 1104. So it gave me 5. Yes or no? Yes ma'am. इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, एक बहुत लेमन टर्म्स में लिखी हूँ, ये तरीका सही नहीं है ना. ऐसे लिख दिया मैंने इसको. Yes. इस मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहती हूँ. Yes. ठीक है, सो प्लीज डोंट राइट मेमोरी एड्रेसेस लाइक दिस, इट वोंट वर्क. So this is what I have written, that star PTR is treated same as value 1. या तो मैं value 1 लिखूं या मैं pointer को dereference कर दूं. Clear? Okay ma'am. Yes ma'am. Now
once assigned a pointer value can be reassigned to another value. कि अभी के लिए मैंने क्या किया था, पॉइंटर वैल्यू 1 का एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर दिया था, ठीक है. एट सम अदर स्टेज में भी I can do it, I can reassign this pointer variable to some another value. तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, value 2. अब अगर मैं प्रिंट करूं, what should be the output? 7. किसने पहले डाउट पूछा था जिसको समझ नहीं आया था? Yes, ma'am. चलो समझ में आ गया. इसका आउटपुट क्या आएगा अब? 7. पक्का? Yes, ma'am. Okay, so is this clear? The very basic things we have discussed in today's class. ठीक है. In next class में we will talk about how to pass these pointer variables. Why the strength is becoming low day by day? And the topic is becoming difficult day by day. तो फिर तो strength बढ़नी चाहिए ना. खुद से कर लोगे क्या बाद में? नो मैम, वो मैम आज शायद क्विज की वजह से नहीं आए होंगे. अभी तक तो बच्चे मतलब उसी में लगे बहुत अच्छी बात है. मैंने बोला था पॉइंटर्स मैं स्टार्ट कराऊंगी और वो नहीं समझ आता है ऐसे देखने से. मैम एक पॉसिबल रीजन वो भी हो सकता है उधर दिल्ली में वो नेट का जो मतलब वो हुआ है, कुछ बच्चों से कारण नहीं आ पाए होंगे. कोई दिल्ली का स्टूडेंट है इस क्लास में? दिल्ली एनसीआर का? यस गुड़गांव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल रहा है यस मैम. वाईफाई हॉटस्पॉट? मैम ब्रॉडबैंड तो वर्क कर रहा है पर Broadband. वो सिम नेटवर्क वर्क नहीं कर रहे. और वो कब तक वर्क करेंगे? ये नहीं पता मैम. मैम पता नहीं ना अभी वो. मतलब कुछ नहीं चलता है. मैम न्यूज़ में शाम के 5 बजे तक है. ओके ओके, चलो ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. Thank you, ma'am. थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.